Hello everyone, my name is Nihal Ansari. I am here a software trainer at VCare Technical Institute, Lakshmi Nagar, New Delhi, and today I am going to teach you about fundamentals related to C. So in previous class we have finished the basic idea of programming and the introduction of programming. Now moving forwards, we have to talk about fundamentals related to C. So basically there are five types of fundamentals like variables, data types, keywords, identifier, and operator. Now, moving ahead, first is variable. So, variable is basically name of memory location. They are used to store data, and their values can be changed. Now, moving forward, now we have to find that how to declare variables. So to declare variables, we have to first type int, that is a data type, and is a basically is the name of the variable. So a can be considered as name of the variable, hence the radius here, and c they are all names of dictate that. Now moving forward, so here it is float and char, they are basically data types. Now there are some rules for defining variables. So variables can have alphabets, digits, and underscore, and variables cannot start with digit. So basically there are valid variable names and invalid variable names. Like, so this is a valid variable name. This is also variable name start with underscore, and this is also valid variable name if digit. However, there are invalid variable names like two. So two is already a digit. It cannot be a variable. It cannot be a variable. So this way it cannot declare. And A, B, so there are space available. So this is not how to declare a variable. And long is already a reserved keyword. So this should not be way to declare a variable. Now moving forward, let's talk about types of variable in C. So basically there are local variable which is declared inside the function. Then it's a global variable which declared outside the function. So now there is a static variable which have a static keyword, automatic variable which have a auto keyword, and external variable which have a extern keyword. Now let's move ahead and start with the data types to move on with fundamentals. So basically there are four data types: basic. So there are four data types: basic, derived, enumeration, void. So int, char, float are basic data types, and int have 2 bytes, character have 1 byte, float have 4 byte. So by one we talk about this. There are derived data types like array, pointer, structure, enumeration using enum keyword, and void means empty, there is no written value. So these are kind of a data types. Now move on to further topics or further fundamental related to C is keyword. So basically keywords are the reserved word which cannot be further used for declaring a variable. So keywords are the reserved words like int, break,
case, float, short, unsigned, return, register, short, signed. So बेसिकली ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे, इन्हें हम आगे जाके यूज करेंगे और ये रिजर्व वर्ड हैं जो कभी भी यूज नहीं हो सकते एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। Our next fundamental is identifiers. So basically, identifier represents name in C program and names of variables, name, function, arrays. So basically, identifiers हमारे क्या करते हैं कि आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो हमें पहचानने में मदद करते हैं कि क्या वेरिएबल का नेम होना चाहिए जिन्हें हम लेटर यूज कर सकें। ठीक है, एंड वन मस्ट कंडीशन दैट identifiers cannot identifiers so basically हमारे नेक्स्ट जो रूल्स होते हैं उसमें सबसे पहला रूल यही होता है आइडेंटिफायर्स कभी भी कीवर्ड्स के लिए यूज नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी केस सेंसिटिव and they cannot be used for keywords. Now moving further, so there are some examples of valid identifiers, invalid identifiers. So there are some rules for writing those identifiers. So for example, we can write valid identifiers as total, sum, average, underscore sum, area underscore circle underscore m. So these are some rules or some ways that we can define a variable. However, we have to note that there are some cases that there are some names or some cases that we cannot define an identifier like to sum because it start with a numerical digit. Int, it's already reserved keyword. As I already stated, it cannot be identifier, cannot be used for identifier. Char, it is a reserved word, cannot be used defining for characters, cannot be used as an identifier. And then m plus n, so there's a special character plus and cannot be used as identifier. So here is a special character plus and it cannot be used as identifier. So they are red flags for defining identifier, while there are some ways that we can define our identifier. Now moving further to our topic. So now we have defined the keyword and we can define, we have also defined the identifiers. So, and I have already explained some differences between them. So let's explain थोड़े से इनके बारे में हम अंतर समझते हैं कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड है। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन किया है कंपाइलर ने, हमने नहीं बनाया है। जबकि आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड वर्ड है, यूजर जो प्रोग्राम बनाता है उसने डिफाइन किया है वर्ड। ठीक है, कीवर्ड को हमेशा हम लोअर केस लेटर में लिखे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है तो ऑब्वियसली लोअर केस लेटर में होंगे। लेकिन आइडेंटिफायर लोअर केस और अपर केस में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर की को कि वो किस अल्फाबेट को चूज कर रहा है, लोअर केस को अल्फाबेट्स को या अपर केस अल्फाबेट्स को, किसको चूज कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कीवर्ड प्री डिफाइंड वर्ड है तो इनके मीनिंग भी प्री डिफाइंड होते हैं इन सी कंपाइलर। हाउएवर आइडेंटिफायर होते हैं वो उनके मीनिंग को हम प्रोग्रामर को या यूजर को डिफाइन करना पड़ता है क्योंकि उनके मीनिंग्स नहीं आते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू फर्दर टॉपिक नाउ। अब हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं जो सबसे फिफ्थ फंडामेंटल्स है लैंग्वेज का, जिसमें हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो आप जानते ही होंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। देयर इज आल्सो परसेंटेज। ये परसेंटेज इज नॉट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ये परसेंटेज जो है वो हमें मॉड्यूलाई और रिमाइंडर के लिए भी होता है। डिविडेंड से हमारा डिवाइड करने से तो डिविडेंड आता है, लेकिन परसेंटेज लगाने से अगर हम दो नंबर्स के बीच में परसेंटेज लगा रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो रिमेनिंग रहता है वो आता है। सो इट्स नॉट सेम परसेंटेज एज इन मैथमेटिक्स, as coding is very different and coding syntax is very different from the mathematical syntax. So now arithmetic operators has done, then relational operators,
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं कि दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. देन वी हैव शिफ्ट ऑपरेटर्स, जिसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम बाइनरी वैल्यू, जो कंप्यूटर की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है बाइनरी, जिसमें पूरा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, पूरा सिस्टम वर्क करता है कंपाइलर कोड में, तो वहां पर हम कैसे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट करते हैं, और उससे डेसिमल नंबर जिसे जिसे हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या फर्क आता है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो लॉजिकल ऑपरेटर्स इज अबाउट वेदर दो कंडीशन सही हैं, दो कंडीशन फॉल्स हैं, एक कंडीशन ट्रू है, सो उन दोनों कंडीशन के बीच में कंपेयर करते हैं. ये रिलेशनल ऑपरेटर से बहुत डिफरेंट होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. हाँ, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब हम डबल एंड यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ डेसिमल या अल्फाबेट्स में यूज कर रहे हैं जो लैंग्वेज ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ बिट वाइज ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तब हम एंड उनमें लॉजिक्स की बात एंड और कॉम्प्लीमेंट वही करते हैं, बट यहाँ पर हम बिट्स में या बाइनरी में डील कर रहे हैं. देन टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं. वैसे तो हमारे पास कंडीशंस के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स होता है, बट कभी कभी हम क्वेश्चन मार्क से वो टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स लगा लेते हैं. देन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ए प्लस इज इक्वल टू वी. ठीक है, यहाँ पे हाँ, जो इक्वल टू होता है वो मैथमेटिक्स का इक्वल टू नहीं होता. जैसे मैंने कहा कि कोडिंग का सिंटेक्स बहुत डिफरेंट है मैथमेटिक्स से, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, ना कि इक्वल करते हैं, और इन दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. नाउ मूव ऑन टू सम फर्दर टॉपिक्स. तो सम अदर फंडामेंटल्स related to C. So now move on to अबाउट लाइक कमेंट्स इन सी, कि कमेंट सी में हम कमेंट्स करते हैं. ये क्या करते हैं, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कोड, और ये इग्नोर्ड हो जाते हैं कंपाइलर के द्वारा. हम कभी कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास 1000 लाइन का कोई प्रोग्राम है और उसे हमें लिखना है, और हम बहुत दिनों बाद उसको खोल कर देखते हैं और हमें कभी समझ में नहीं आता, तो हम कुछ कमेंट्स डालते हैं जो कि प्रोग्रामर और यूजर के सहूलियत के लिए होता है, ताकि आप उसे अगर बाद में कभी खोल कर देखें तो वो आपको समझ में आ जाए. और इसमें दो टाइप के कमेंट्स आते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स. So in single line comments, we use double slash. So they use for printing the syntax of single line comment. So this is the syntax of single line comment, and we can print it like that. And then there is a multi-line comments. In this we have used slash and asterisk. So so this is the format or syntax of how to write a single line comment. So it start with dash and star, and end with star and dash. So this is the syntax. Now move on to some further topic, which is about C format specifier. So basically C format specifier is used to format input and output functions. So there are some format specifier is given. Now we have given some format specifier and their description. So basically they are written like the percentage D, sorry. So they are written like percentage D or percentage I. In this means signed integer value. So basically signed means both positive or negative values, and unsigned means here only positive values. So here percentage D or percentage I can declare the signed integer value which can accept both positive and negative values. However, percentage U is only declare the unsigned integer value which can accept only positive values. Now there is a percentage O which can accept octal unsigned integer, and percentage X is a hexadecimal unsigned integer in small letters. If we use percentage capital X, that is hexadecimal unsigned integer, we can also assign that, but in capital letters, because hexadecimal values include the letters, the alphabet letters. And then there is a percentage F, which of course include all the real numbers including decimal
floating point values. So this is some of the descriptions of format specifier, and we have talked about mainly about theories. So let's do some practical work and let's go to our program. Now open the compiler. I have used DAV C++ compiler. You can use any compiler with your preference. अगर आपको कोई अच्छा लगता है कंपाइलर, ऑनलाइन अच्छा लगता है या टर्बो अच्छा लगता है, कोई भी कंपाइलर आपको अच्छा लगता है तो आप वो यूज कर सकते हैं. मैं भी DAV C++ यूज करने जा रहा हूँ. हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स डालते हैं. सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा विंडो बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे. तो हम डालते हैं इंक्लूड. हमें प्रॉपर सिंटेक्स डालना है. इंक्लूड stdio.h. This is to include the input output header file. Now go to our main program, int main, and this is the syntax of starting our main program. So we have declared int b is equals to 6. So B, as I have already told you, B is a variable, is a name for variable having data type integer, and 6 its value. Now declare another value according to our need of program, which is C is another variable. C is equals to 8 and having value 8. Now we have to use printf. So printf used to output, as I have already told you earlier in earlier classes, that we have used printf for printing, फॉर शोइंग द आउटपुट. हमें आउटपुट दिखाना है यूजर को, तो उसके लिए हम प्रिंटफ यूज करते हैं. अगर यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनफ यूज करते हैं, और ये इंक्लूड होता है हमारी हेडर फाइल में, यानी stdio फाइल में इंक्लूड होता है. नाउ जस्ट टाइप वैल्यू ऑफ b is, and now use format specifier %d and just print the values. Now again we have to print another value because we have declared another variable. So now value of C is %d C, and सेमीकोलंस का बहुत ध्यान रखना है. अगर सिंटेक्स जरा भी इम्प्रॉपर होता है तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा. एंड बिकॉज वी हैव यूज int main, so return 0 for successful execution. So this is how our program run, and we have to compile, and we have to save this file. So save and file. So we have saved our file by any name. I have chosen this name. You can choose your name, and I want to show user. So this is the file name. So here our value of b is, you can see that the value of b is 6 and value of c is 8. Here we can use escape sequences because yes. So now it will be clear to you. So value of b is 6 and value of c is 8. You can see that. So we have declared two variables, and using format specifier we can use them integers. Now move on to another program. In it, make new file. So make new file, and now we have to write the code again. So now we can write a program. As I have already told you, we can write programs in comments like /. They are ignored by the compiler, but ये हमारी सहूलियत के लिए या फिर आप जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है. So program to show the case sensitive nature of identifiers. मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं. तो मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं जो उस प्रॉपर्टी को शो करेगा. तो हम लोग आउटपुट इनपुट फाइल इंक्लूड करते हैं. मेक श्योर कि स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट रहें, तभी आपकी इनपुट फाइल रहेगी. ठीक है. सो हमने इनपुट एंड आउटपुट फाइल आपकी इंक्लूड कर ली.
और अब हम मेन फंक्शन यानी मेन प्रोग्राम पे जाते हैं। हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, a is equals to 10, int कैपिटल A is equal to 20। आप ध्यान देना कि मैंने दोनों ही को ए लेटर लिया है, एक को बस लोअर केस में लिया है, एक को अपर केस में लिया है, और दोनों हमारे जो वेरिएबल है सेम है, और मैंने दोनों की डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। तो अब मैं दोनों की वैल्यूज प्रिंट कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले प्रोग्राम में की थी। तो देखते हैं कैसे होती है। वैल्यू ऑफ ए इज, अब हमें वैल्यू पुट कराने के लिए, यूजर को शो करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, जो हमें पता है क्या है। हमने इंटीजर डिक्लेयर किया तो परसेंटेज डी आएगा। हम इनको इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमने वैल्यू शो कर दी। और दूसरी दूसरी वैल्यू जो हमने कैपिटल में चुनी थी उसको भी हम यूजर शो करते हैं, बट कैपिटल ए इज डी, और अभी हम उसको प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं कि क्या हम, फॉर अस this is upper case and lower case, but for us this is a same। so क्या कंपाइलर उसको सेम मानता है, सेम पहचानता है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि कंपाइलर के लिए केस सेंसिटिव है, यानी आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। तो अगर हम लोगों ने इस तरह से डिक्लेयर किया है, एक ही लेटर के में दो वैल्यूज दी हैं, तो शायद सिंटैक्स एरर आना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या आता है प्रोग्राम में। तो पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, और हम केस सेंसिटिव नाम से सेव कर लेते हैं। आप कुछ भी सेव कर सकते हैं इस फाइल को। सो मैं आपको दिखाता हूँ क्या वैल्यू आई है। तो ए की वैल्यू 10 आई है। देखते हैं, ए की वैल्यू आपकी 10 आई है, और ए की स्मॉल ए की वैल्यू 10 है, कैपिटल ए की 20 है। तो मतलब कंपाइलर इन दोनों को सेपरेट वैल्यू मानता है। हमारे लिए दोनों लेटर सेम है, अपर केस और लोअर केस है, हम ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे कंपाइलर के लिए दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है, इन दोनों का लोकेशन, दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, इसलिए दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। तो इसका मतलब, हाँ, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या में आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। उन्हें आपको आपको उन्हें डिफरेंट नेम से डिक्लेयर करना पड़ेगा। उनमें आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यू शुड हैव नोट अबाउट स्पेलिंग, यू शुड हैव नोट अबाउट द केस सेंसिटिवनेस ऑफ द वेरिएबल्स। नाउ हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट प्रोग्राम वी आर प्रिंटिंग, वी आर शोइंग द फ्लोट वैल्यू। अभी तक हम इंटीजर्स में कर रहे थे, तो हम चेंज के लिए, कुछ चेंज के लिए हम फ्लोट वैल्यू करते हैं टू यूजर। तो नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाते हैं और हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इंक्लूड stdio.h। सो यह हमने इनपुट एंड आउटपुट फाइल इंक्लूड कर ली। अब हम अपने मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक वैल्यू फ्लोट, एक कोई भी वैल्यू वेरिएबल y, एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फ्लोट, हमने कह दिया, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब नेक्स्ट हम इसको चाहते हैं कि ये वैल्यू प्रिंट हो। सो द वैल्यू ऑफ y इज, अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, परसेंटेज f और स्लैश एन हमने नई लाइन के स्केप के लिए कर लिया, और हमने इसकी वैल्यू y में दे दी। सो अब रिटर्न 0 फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए करते हैं, और अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे मैंने उसको रन किया, हमारी प्रोग्राम में वैल्यू आई y की 3.4 और 0 आए। ये इसकी रेंज है, फ्लोट की रेंज है। तो फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज इंक्लूड कर सकते हैं, हम इंटीजर में नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से इसकी वैल्यूज होती है। अब मैं इसी प्रोग्राम में चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। और so tune for more such updates, follow VKR Technical Institute, and in next class we would talk about the conditional statements, if else, or then we move on to loops. So tune for more such updates, follow VKR Technical Institute. Thank you.